Hello everyone. Welcome you all in Ruhul's tutorial. Today we will discuss Intex question solution of third chapter metals and non-metals of class 10. So let us start. First question is, give an example of metal which is a liquid at room temperature. एक ऐसा मेटल का नाम बताना है जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर. So already this we have discussed in metals and non-metal part 1, part 2 and part 3. So all these will be repeated. So metal which exists in liquid state, the answer will be mercury. So mercury is the metal which exists in liquid state. Okay, second, one metal which can easily cut with the help of knife. So metals are generally hard. Okay, so three metals are there which are soft. They are so soft that they can be cut with the help of knife. So second number answer you can give as sodium. What is the symbol of sodium? Na. Or you can give potassium. Potassium is K. And lithium. Lithium is Li. So any one you can give sodium, potassium or lithium. These are the soft metals, so soft that they can be cut with the help of knife. Generally metals are hard. And generally metal exists in solid state, but mercury is the only metal which exists in liquid state. Now best conductor of heat. Best conductor of heat. So metals are good conductor of heat. So best conductor of heat are silver and copper. So you can write any one. So only one we have to write. So your wish, you can write silver or you can write copper. Poor conductor of heat. Which one is the poor conductor of heat? So poor conductor of heat are lead and mercury. Lead. What is the symbol of lead? Pb. And mercury. Mercury we know that Hg. Mercury, the symbol is Hg. Copper is Cu. Silver is Ag. So poor conductor of heat is lead and mercury. Okay. 2 number is explain the meaning of malleable and ductile. So we have got in the physical properties of metals and non-metal. What is the meaning of malleable? Malleable means if you hit the metal, if you hammered the metal, then metal can be converted into thin sheet. अगर metal पे आप hit करते हो, hammered करते हो, तो metal क्या होता है? Sheet में convert हो जाता है. They change their shape and converted into thin sheet. And this property is called malleable. Gold and silver. Gold and silver are the best malleable metals. Okay. Next, ductile. What is the meaning of ductile? Ductile means some metal can be converted into thin wires. Metals can be converted to thin wires. You have seen in our house, electricity is there. So for passing electricity, wire we are using. So wire of those are of metals. So metal can be converted into wires, and this property of metal is called ductile. So which is the most ductile metal? Gold. So gold is the most ductile metal. Okay, proceed to third one. Why is sodium kept immersed in kerosene oil? So sodium is a metal. So why sodium metal is kept under kerosene oil? See, sodium is very reactive metal, highly reactive metal.
sodium, potassium, these are the highly reactive metal. If you keep sodium here, means in the atmosphere, then in atmosphere what is present? Air. Inside air is what? Oxygen, water vapors, these are present. So in the air, oxygen and water vapors are present, they react with sodium. In air, oxygen is present, water vapors are present, they react with sodium, and the reaction is highly exothermic, and the reaction takes place vigorously. Means the reaction of oxygen, water with sodium is so fast that they can catch fire. So immediately fire can be seen there. So to protect the sodium from the above reaction, it is kept under kerosene. सोडियम क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल है. इसको अगर एयर में रखते हो तो एयर में ऑक्सीजन है, वाटर वेपर, इससे रिएक्शन करता है. रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि फायर कैच कर सकता है. तो ये रिएक्शन नहीं हो, सोडियम प्रिवेंट हो, बचा रहे, सो सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल. नेक्स्ट, write the reactions. We have to write the reactions of iron with steam. Okay, write the reaction. Question number 4. Reaction of iron with steam. So for 1. So iron, the symbol of iron is Fe. Okay, iron is solid. Steam. Steam is what? Water in gaseous state. So iron react with steam to form iron oxide, and hydrogen gases are released. So iron oxide having the formula Fe3O4. Fe3O4. Iron oxide is formed, and this is in the solid state, and hydrogen gas is produced, and this will be evolved. So you can balance it. 3 iron is there, take 3. Okay, oxygen 4 is there, take oxygen 4 times, this 4. How many hydrogen? 8. So take 4 times, 4 2s are 8. 3 iron, 4 oxygen, 8 hydrogen, 8 hydrogen. So this is the balanced reaction. Okay. 2 number, calcium and potassium with water. Calcium and potassium. Okay, calcium is solid, react with water. Water is liquid. Okay, so calcium, potassium, these are the highly reactive metal, and we have studied in the chemical properties of metals and non-metal that if highly reactive metal like potassium, sodium, calcium, these react with water, then metal hydroxide and hydrogen gases are produced. So it is highly reactive, so metal hydroxide will produce. Also potassium is highly reactive, so in this case also metal hydroxide will produce. But iron is less reactive. Iron is also metal, but it is less reactive, and normally it does not react with cold water, it reacts with steam. So it is less reactive, so iron oxide is formed. They are highly reactive, so metal hydroxide is formed. Now balance. Calcium have the valency 2 and OH have the valency 1. Now crisscross. So formula will be calcium 1 time, OH 2 time. Calcium 1 time, OH 2 time. Potassium have the valency 1, OH have the valency 1. Formula will be KOH. So formula will be KOH. So this valency part we have discussed in lecture number 3 of metals and non-metals. Okay. And hydrogen gas will be formed. The reaction of metal with water can give you metal hydroxide if the metal is highly reactive,
and this will give you metal oxide if the metal is less reactive like iron. Okay, now you can balance. Okay, one calcium, 2 oxygen, 4 hydrogen, 2, 2, 4. Now it is balanced. Now balance this 2 hydrogen, 2, 4 hydrogen, 4 hydrogen, 2 oxygen, 2K, 2K. Now it is balanced. So this is the first part. Now in question number 1, you have to write one example. I have given more than one. You can write any one your wish. So let us proceed to question number 5. 5 number is, samples of 4 metals are there, A, B, C and D, were taken and added to the following solutions one by one. So 4 metals are there, A, B, C and D. They are placed in iron 2 sulfate solution, copper 2 sulfate, zinc sulfate and silver nitrate. The result obtained have been tabulated as follow. So after adding the metal in the given salt solution, what is the observation they are given? Okay. What is asked? Use the table above to answer the following question about the metals A, B, C and D. Okay. What is the first one? Which is the most reactive metal? So out of the metals A, B, C and D, which is the most reactive? Okay. So first of all, let us identify what type of reaction is this. Metal, this is salt. So metal reacted with salt, so what will happen? Displacement reaction. So we have got displacement reaction. Suppose metal B displacement displaces iron. So in place of iron B come and iron is separated. तो ये displacement reaction के बारे में है और यहाँ पे mention भी है. Now we have to identify which is the most reactive. So let us first see their position in the reactivity series. What are the metal mentioned here? Iron, copper, zinc and silver. These 4 metals are there. So first write the reactivity series. What is reactivity series? First potassium, sodium, then calcium, magnesium, aluminium. So these are very highly reactive metals. Then zinc, iron, lead, zinc, iron, lead, then hydrogen, copper, mercury, then silver, gold. Hydrogen, copper, mercury, silver, gold. So this is the decreasing order of reactivity. This is the decreasing order of reactivity. So ये reactivity series है, decreasing order. नीचे आओगे तो सबसे ज्यादा reactive potassium, then sodium, then calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver and gold. Okay. Now, first of all, see which one is the most reactive. So silver is the least one, then zinc, okay, zinc, copper, then iron. So out of the 4 options given, which one is the most reactive? Zinc. तो जिंक इज द मोस्ट रिएक्टिव. तो जो मेटल जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस करेगा, जिंक इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. तो यहाँ पे देखो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, यहाँ पे भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं. मतलब आउट ऑफ द 4 मेटल्स किसी ने भी जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेसमेंट नहीं किया. मीन्स जिंक के ऊपर वाला मेटल्स कोई भी नहीं है. ओके. तो जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, जिंक को कोई डिस्प्लेस नहीं किया. आफ्टर जिंक विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव? नेक्स्ट इज आयरन. क्या किसी ने आयरन को डिस्प्लेसमेंट किया? आयरन सल्फेट, या आयरन सल्फेट
it is displacement. तो सबसे हाईली रिएक्टिव आउट ऑफ द 4 ऑप्शन वाज जिंक, तो किसी मेटल्स ने जिंक को डिस्प्लेस नहीं किया. चलो सेकेंड मैंने देखा, सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव इज आयरन गिवन, तो आयरन को किसने डिस्प्लेसमेंट किया, बी ने, तो बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, क्योंकि आयरन टू सल्फेट को ना ही ए सी डी किसी ने डिस्प्लेस नहीं किया, ओनली बी ने किया, सो बी विल बी द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स. सो आवर आंसर नंबर 1, which is the most reactive metal, the answer is B. Why? Because it displaces iron, which is most reactive out of the 4 option given. Okay. What would you observe if B is added to a solution of copper to sulfate? Yes. तो B को कॉपर टू सल्फेट में अगर रखोगे तो क्या होगा, तो अगर B ने आयरन को डिस्प्लेसमेंट किया है तो कॉपर को तो और आसानी से डिस्प्लेस करेगा, बिकॉज B इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, मीन्स B इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो B विल डिस्प्लेसेस कॉपर. सो वी कैन से दैट अगर आप B को कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में रखते हो तो B क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद B का पोजीशन और कॉपर का पोजीशन में B आ जाएगा. सो वी कैन से दैट सिंस B इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो B will displaces copper from copper sulfate. कॉपर टू सल्फेट से कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि मोर रिएक्टिव है. कैसे पता चला, बी जब आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है तो कॉपर को तो और आसानी से. थर्ड वन, अरेंज द मेटल ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, which means decreasing order means बड़ा से छोटा, तो which is the most reactive, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही था B. अच्छा, नाउ सी, A जो है कॉपर को डिस्प्लेस किया, मतलब A कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है. On here no reaction, here 1 is there. Now see what about D. D ने किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया, मीन्स आयरन से भी लेस रिएक्टिव, कॉपर से भी, जिंक से भी, सिल्वर से भी. सो वी कैन से दैट D is the least reactive. D is the least reactive, किसी को डिस्प्लेस नहीं किया. ओके, B is the most, क्योंकि सबसे हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस किया, D ने किसी को नहीं किया, लिस्ट. नाउ बचा A और C. तो देखो A क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस किया, मींस A इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है. और C ने किसको डिस्प्लेस किया, सिल्वर को, तो C सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है. तो A कॉपर को डिस्प्लेस किया, मींस मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर के ऊपर वाला मेंबर. और C जो है सिल्वर को डिस्प्लेस किया, तो सिल्वर से ऊपर वाला. तो दोनों में कंपेयर किया जाए तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसने कॉपर को डिस्प्लेस किया. तो कॉपर को डिस्प्लेस किया A, तो A विल बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू C. तो मोस्ट रिएक्टिव भी, लिस्ट तो D है, D किसी से नहीं किया. A ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, C ने सिल्वर को, सो डेफिनेटली कॉपर को जो डिस्प्लेस किया दैट विल बी मोर रिएक्टिव. ओके, सो लेट अस सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर 6. 6 number is, which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? तो reaction of dilute hydrochloric acid with active metal will give you hydrogen
gas. Okay. So reactive metal, suppose this is answer number 6. Okay. So M is the reactive metal. If you react with dilute hydrochloric acid, so metal plus dilute acid, salt and hydrogen gas. Metal plus dilute acid, salt and hydrogen gas are produced. So hydrogen gas H2 is removed and salt will be produced. So MCl2, metal chloride will be the salt. So we can say that hydrogen gas will produce. Hydrogen gas is produced when dilute hydrochloric is added to reactive metal. When dilute hydrochloric acid is added to reactive metal. Okay, this is the first part. So metal, dilute hydrochloric acid, hydrogen gas is produced. Write the chemical reaction when iron react with dilute sulfuric acid. So next question is asked, the reaction of iron with dilute sulfuric acid. Okay. So iron, the symbol is Fe, iron is solid, and dilute sulfuric acid H2SO4. What is the meaning of dilute? Dilute means addition of water, means in acid water is added and more quantity of water is there. So what will be the reaction? Iron is more reactive than hydrogen. So iron H, it is more reactive, will displace hydrogen. So salt will be FeSO4 and hydrogen gas will release. So iron sulfate, this will be in water, aqueous, and hydrogen gas will produce this. So metal with dilute acid, salt and hydrogen gas will produce, and this is from iron sulfate or iron 2 sulfate, you can say. Okay, so this is about question number 6. So let us do question number 7. What would you observe when zinc is added to a solution of iron 2 sulfate? Write the chemical reaction also. So answer number 7. 7 is asked what you will observe. Okay, and reaction we have to write. So write the reaction, zinc with iron 2 sulfate solution. So zinc is solid. Okay. Iron 2 sulfate is FeSO4. Solution means it is dissolved in water. So what type of reaction is this one? Displacement reaction. Zinc. Zinc is more reactive than iron. So as zinc is more reactive than iron, just now we have seen in the reactivity series. So zinc will displace iron. So it will be ZnSO4, zinc sulfate, and iron will be released. So zinc is solid, okay, iron sulfate solution is there, means aqueous we have given. So zinc sulfate will be in water, aqueous, and iron will be in the form of solid. So this is the reaction, zinc displaces iron. Now next is asked observation. What would you observe? What will be the observation? Iron sulfate is green color, so green solution will be there. And when it is displaced by zinc, so zinc sulfate is colorless solution. So observation, we can say that zinc displaces iron from iron 2 sulfate and green color of solution disappear. So we can say that observation will be zinc will displace iron from iron 2 sulfate. Zinc will displace iron from iron 2 sulfate, and green color of
iron sulfate solution will disappear, green color will disappear, and green color of iron sulfate will disappear, and colorless solution of zinc sulfate formed. So this will be the observation. Zinc will displace iron from iron sulfate, and green solution will disappear, and colorless solution of zinc sulfate will form. So let us proceed to question number 8. 8.1 is write the electron dot structure. Electron dot structure already we have discussed in metal and non-metal part 3. तो इसमें क्या करना होता है कि लास्ट शेल में प्रेजेंट होने वाला इलेक्ट्रॉन को शो करना है ओनली. ओके, सो लेट अस ट्राई दिस. सो किसका लिखना है? सोडियम. तो फर्स्ट इज सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. सो 8.1. So first is sodium. What is the atomic number of sodium? Yes, 11. 1, 1. So electronic configuration will be 2,8,1. This part we have already explained in metals and non-metal part 3. So sodium 281. So in the last shell, how many electrons are there? 1. In the first shell, 2 electron. In the second shell, 8. In the third shell, 1. So in the last shell, 1 electron is there. Therefore, electron dot structure will be electron dot structure is sodium, and last shell contains 1 electron, so show just 1 electron. So in the same way, oxygen you can form atomic number 8, electronic configuration. In the first shell 2 electron, in the second shell 6, and their electron dot structure will be oxygen. So how many electrons are there in the last shell? 6 electron. So give 6 electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So electron dot structure means in the last shell the number of electron present, give that one. Magnesium, the atomic number of magnesium is 12. So configuration, first shell 2, second shell 8, 2, 8, 10, third shell 2. So again in the last shell, how many electrons are there? Only 2. So its electron dot structure will be magnesium, give just 2 electron, and that will be our answer. This is for magnesium. Magnesium 2 electron. So electron dot structure means electron present in the last shell. जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होगा उसे आप शो कर दे. नेक्स्ट, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सॉल्व दिस वन. Question number 8b. So 8.2 each. Formation of sodium oxide. Formation of sodium oxide. How it is formed? Okay, so let us try this. So sodium is metal, oxygen is non-metal. The reaction of metal with non-metal will give us ionic compound or electrovalent compound. How they will form? Let us try. So first take sodium. Okay, what is the atomic number? 11. Electronic configuration 281. तो सबसे पहले क्या करना है? मेटल और नॉन मेटल दोनों को स्टेबल बनाना है. तो सोडियम स्टेबल कब होगा? तो स्टेबिलिटी विल बी देयर इफ दे अटेन देयर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो नोबल गैस
कौन कौन सा था? हीलियम एटॉमिक नंबर 2 कॉन्फ़िगरेशन 2, नियोन था एटॉमिक नंबर 10 कॉन्फ़िगरेशन 2,8 एंड आर्गन था 18 कॉन्फ़िगरेशन 288। तो जो भी मेटल्स या नॉन मेटल है अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह होना चाहेगा। तो सोडियम का नियरेस्ट कौन है? नियोन एटॉमिक नंबर 10। तो 2,8 का कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहेगा, उसके लिए सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा। तो सोडियम ये 2,8,1 है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो क्या होगा? लॉस करने से प्लस चार्ज, एक लॉस कर दिया, अब स्टेबल हो गया 2,8। अब नन मेटल का कर ले। नन मेटल क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8, कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2,6। तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस नियोन 2,8 होना चाहिए। तो ये भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो चलो, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फ़िगरेशन 2,6, so it will also gain 2 electron, give him 2 electron, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 2,6 था, अब 2,8 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो चार्ज विल बी 2 माइनस। नाउ दिस इज स्टेबल, दिस इज स्टेबल। तो अभी ये पता चल गया कि सोडियम स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब दोनों को कंबाइन कर दे, कंबाइन बोथ ऑफ दिस। तो सोडियम का लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था और ऑक्सीजन लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन था। नाउ इट इज क्लियर दैट सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटल लॉस करेगा सेम इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल गेन करेगा। सोडियम ने लॉस किया, ऑक्सीजन ने गेन किया। तो सोडियम ने लॉस किया, ऑक्सीजन ने गेन किया, सोडियम बिकम स्टेबल। बट ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए। ऑक्सीजन रिक्वायर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2, बट 1 सोडियम तो एक ही दे रहा है। तो क्या करे? एक और सोडियम ले ले। तो एक और सोडियम जो है दे दिया। तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए था, 2 मिल भी गया और सोडियम भी स्टेबल। तो ये बन गया आयोनिक कंपाउंड। सोडियम एक लॉस किया तो एक सोडियम 1, 2 सोडियम 2, NO को 2 चाहिए। सो Na ने एक लॉस किया तो Na प्लस बना। हाउ मेनी सोडियम आर देयर? 2, तो Na प्लस 2 बार है। ऑक्सीजन ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन करने से 8 हो गया, एंड 2 गेन किया तो चार्ज विल बी 2 माइनस। तो एक बार ऑक्सीजन है, एक बार ऑक्सीजन है। तो डेट इज फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दिस विल बी सोडियम 2 बार मिला और ऑक्सीजन 1 बार, तो Na2O। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। नाउ लेट अस ट्राई मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब MgO का ट्राई करें इन द सेम वे। MgO, तो फॉर्मेशन ऑफ MgO, फॉर्मेशन ऑफ MgO। ओके, सो मेटल कौन है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 282। इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? नियोन एटॉमिक नंबर 10। तो इसे 2 लॉस करना होगा क्योंकि लास्ट शेल में 2 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके मैग्नीशियम 2 प्लस बनाया। इन द सेम वे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का बात तो सेम ही रहेगा जो यहाँ पे है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, गेन करके O2 माइनस हो गया एंड 2,8 इट बिकम स्टेबल। सो बोथ बिकम स्टेबल। तो ये पता चल गया मैग्नीशियम 2 लॉस करेगा, ऑक्सीजन 2 गेन करेगा। अब दोनों को कंबाइन कर दे, कंबाइन बोथ ऑफ देम।
तो मैग्नीशियम का लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, एंड ऑक्सीजन का लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। तो मैग्नीशियम 2 लॉस करेगा, ऑक्सीजन 2 गेन करेगा। तो Mg ने दे दिया किसको, O को दे दिया। Mg को 2 देना था, 2 दे दिया, O को 2 चाहिए था, 2 मिल गया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बराबर है, ठीक है। तो Mg ने 2 दिया तो लॉस किया तो 2 प्लस, ऑक्सीजन ने 2 गेन किया तो कितना हो जाएगा, देयर विल बी 6 और 2 मैग्नीशियम से मिल गया, 8 हो गया। और दिस इज व्हाट, और यू कैन राइट MgO. So in this way you can form magnesium oxide. Now A3 is there. What are the ions present in this compound? ये compound में क्या क्या ions होगा, okay. So ions बताना है, तो इन सोडियम ऑक्साइड क्या क्या ions मिला, सोडियम आयन एंड ऑक्साइड आयन इन Na2O, सोडियम ion Na plus and oxide ion. What is oxide ion? O2 minus. तो एक सोडियम आयन और एक ऑक्साइड आयन आर प्रेजेंट। एंड किसमें पूछा है, MgO में। तो इन MgO क्या क्या है, मैग्नीशियम आयन मिला, magnesium ion formula is Mg2 plus, this is magnesium ion, or oxide ion, and oxide ion is O2 minus are present. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन है, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन। So this was question number 8. So let us proceed after 8. 9 number is, why do ionic compounds have high melting point? Okay. So melting point depends upon the force of attraction which a compound has. Suppose एक compound लिया मैंने A और B, ओके, A और B के बीच एक कंपाउंड है, C और D के बीच एक कंपाउंड है। तो A और B के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा ये काफी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और C और D के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा वो कमजोर है। सपोज A, B, two elements are there and they have very strong force of attraction, और C और D दो कम एलिमेंट है, इसके बीच वीक फोर्स है। तो दोनों में जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, तो यहाँ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मजबूत है, मतलब ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा, दिस विल नॉट ब्रेक इजीली। और जब ये ब्रेक इजीली नहीं होगा, नॉट ब्रेक इजीली मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसको ज्यादा हिट करना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए, और इसके बीच फोर्स वीक है, मतलब आसानी से ब्रेक होगा, और इजीली ब्रेक होगा मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, थोड़ा सा आप हिट करो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि अंदर से कमजोर है। नाउ सी here it is asked about ionic compound. So we know that ionic compound are made up of ions. जैसे अभी अभी लिया था क्वेश्चन नंबर 8 में, तो सपोज मैंने लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म बाय मैग्नीशियम 2 प्लस आयन एंड ऑक्सीजन 2 माइनस आयन। तो आयोनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ वन पॉजिटिव आयन, अदर नेगेटिव। तो एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज दोनों के बीच एट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये मजबूत होगा अंदर से, और अंदर से मजबूत होने की वजह से इसे मेल्ट करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बहुत हीट करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा।
मेल्टिंग पॉइंट हाई मतलब क्या हुआ, आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा उसे मेल्ट करने के लिए। तो क्यों मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बिकॉज आयोनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ आयन, और आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, क्योंकि एक प्लस से एक माइनस, अट्रैक्शन होगा, और स्ट्रॉन्ग फोर्स होने से जल्दी ब्रेक नहीं होगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। चलिए 10 नंबर आए। 10 नंबर इज define the term mineral ore and gangue. What is called mineral? अच्छा, मिनरल क्या होता है? तो मेटल्स जो है, वीसी मेटल, तो मेटल आपको डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, सो मेटल हमें मिलता है मिनरल से। एंड व्हाट आर द मिनरल? मिनरल आर दोज कंपाउंड, मिनरल आर दोज कंपाउंड फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिसमें मेटल मिले, और ये मिलता कहाँ है? अर्थ क्रस्ट में, जमीन के नीचे। तो अर्थ के नीचे में जो सब्सटेंस होता है अर्थ क्रस्ट में, जहां से आप मेटल पा सकते हैं, जिसमें मेटल या उनका कंपाउंड होता है, उसे मिनरल बोलते हैं। तो मिनरल इज द फर्स्ट स्टेप। व्हाट इज मिनरल? ये अर्थ क्रस्ट में, जमीन के नीचे होगा, जहां से मेटल आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल या उनका कंपाउंड रहता है मिनरल्स में। तो मिनरल्स आर द एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली होता है अर्थ क्रस्ट में, उसे मिनरल बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड ओर? ओर क्या होता है? व्हाट इज ओर? ओके, सपोज वी हैव टेकन मिनरल्स, सपोज एक मैंने ले लिया ये मिनरल, मिनरल नंबर 1, एक मैंने ले लिया ये मिनरल नंबर 2। ये मिनरल हमें आयरन देगा, ये भी मिनरल हमें आयरन देगा। दोनों मिनरल डिफरेंट है, तो अगर दोनों डिफरेंट है तो दोनों से जो आयरन का क्वांटिटी मिलेगा दैट विल आल्सो बी डिफरेंट। सो दिस मिनरल विल गिव डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ आयरन, दिस विल गिव डिफरेंट। तो दोनों मिनरल में से जिसमें से आउट ऑफ दिस टू मिनरल बोथ विल गिव आयरन, तो दिस टू मिनरल्स में जो मिनरल आयरन का क्वांटिटी ज्यादा दे, और ये आयरन निकालने में पैसा भी खर्चा कम हो, मीन्स प्रॉफिटेबली भी होना चाहिए, क्वांटिटी भी ज्यादा मिलना चाहिए, और इजी वे में भी होना चाहिए। ये तीनों बात जिस मिनरल फुलफिल करेगा दैट मिनरल इज कॉल्ड ओर। व्हाट इज ओर? ओर नया चीज नहीं है, ओर इज ए मिनरल, ओर इज ए मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कॉन्वेंटली। और मिनरल होता है जहां से मेटल को प्रॉफिटेबली निकाला जाता है, इजी वे में निकाला जाता है, पैसा भी कम खर्चा और क्वांटिटी भी ज्यादा मिले। तो ओर आर द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कॉन्वेंटली। व्हाट इज गैंग? तो ओर से अभी आपने मान लिया, मिनरल से आपने सिलेक्शन किया ओर का, एंड ओर क्या है? ओर तो मिनरल ही है। मिनरल कहाँ मिलता है? अर्थ क्रस्ट में, नेचुरली होता है। तो ये जो नेचुरली ऑकर्ड होता है जमीन के नीचे, तो उस मिनरल में, उस ओर में कुछ इम्प्यूरिटीज रहेगा, मिट्टी, बालू, इम्प्यूरिटीज। दैट इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड गैंग। What is gangue? These are the impurities present in the ore. And ore तो जानते ही हो, mineral found in earth crust naturally exists. तो gangue are the impurities found in the earth crust. और impurities में क्या होगा? Soil, sand, ये सब। तो gangue मतलब impurities. Name two metals which are found in nature in the free state. मेटल विच आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, तो फ्री स्टेट में वही मेटल्स मिलेगा। इन द फ्री स्टेट दोज मेटल विल एग्जिस्ट ओनली विच आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। जो मेटल्स का रिएक्टिविटी सबसे कम हो, बहुत कम रिएक्टिव हो,
ओनली दोज मेटल विल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अदरवाइज क्या होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करके अदर कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। तो फ्री स्टेट में कौन होगा, ओनली दोज मेटल विच आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे है कौन है सबसे लेस रिएक्टिव, आप प्लेटिनम ले ले, प्लेटिनम लिस्ट रिएक्टिव, देन गोल्ड ले ले, सिल्वर ले ले, कॉपर ले ले। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, these are the metals which are very very less reactive and found in the free state. 12 number is, what chemical process is used for obtaining a metal from its oxide? तो मेटल को निकालना है उनका ऑक्साइड से, तो प्रोसेस यूज्ड इज रिडक्शन। रिडक्शन इज द प्रोसेस, रिडक्शन इज द प्रोसेस फ्रॉम विच मेटल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ऑक्साइड। जैसे मान लो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से जिंक चाहिए, क्या करना होगा, रिडक्शन। रिडक्शन कर दो कार्बन से, तो कार्बन ऑक्सीजन को लेके निकल गया, तो रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन। तो मेटल ऑक्साइड से मेटल अगर निकालना हो तो प्रोसेस यूज्ड इज रिडक्शन। ओके, सो लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। Question number 13 is, metallic oxides of zinc, magnesium and copper were heated with the following metals. तो जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इसको जिंक से हिट किया, मैग्नीशियम से हिट किया एंड कॉपर से हिट किया। इन विच केस यू विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। So here asked displacement reaction. तो displacement reaction कब होगा, when a highly reactive metal will displace less reactive metal from their salt solution. Okay. Now say here zinc is there, so answer for question number 13. So answer for 13 will be, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड इज गिवन, हियर आई एम राइटिंग ओनली दिस वन, यू कैन सी। तो वी हैव टू से कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो जिंक है, तो जिंक क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड को तो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता। तो दिस इज आंसर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहाँ पे होगा, तो जिंक, जिंक को डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा। क्या जिंक मैग्नीशियम को करेगा, नहीं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप देखो तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, सबसे पहले जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर में मैग्नीशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन जिंक, देन कॉपर। तो जिंक जो है मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, जिंक तो नहीं होगा, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक विल डिस्प्लेस ओनली कॉपर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा ना। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, तो इट विल डिस्प्लेस जिंक एज वेल एज कॉपर। तो जिंक और कॉपर दोनों को, तो मैग्नीशियम जो है जिंक वाले को भी डिस्प्लेसमेंट करेगा एंड कॉपर वाले को भी करेगा, कॉपर वाला नीचे है। बट खुद को तो नहीं कर पाएगा, मैग्नीशियम कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ व्हाट अबाउट कॉपर, तो कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव, तो ना ही ये जिंक, मैग्नीशियम या कॉपर किसी को भी डिस्प्लेस नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो वी हैव टू से कि कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जस्ट
ये लिखते हैं नो रिएक्शन, यहाँ पे तो कॉपर किसी को भी डिस्प्लेस नहीं करेगा, लिस्ट रिएक्टिव है, सो नो रिएक्शन विल बी देयर. सो आवर फाइनल आंसर विल बी zinc will displace only copper from copper oxide, magnesium can displace zinc from zinc oxide, and it can displace copper from copper oxide, और copper is the least reactive, तो किसी को displacement नहीं करेगा. 14 is which metals do not corrode easily. कौन सा ऐसा मेटल है जिसपे कोरोशन नहीं होता है, which does not corrode easily. तो those metals which are very very less reactive, जो बहुत ही कम रिएक्टिव हो, रिएक्शन नहीं करेगा, तो कोरोशन नहीं होगा. And just now we have written least reactive metal, तो answer for this is gold. Gold is the least reactive, symbol AU. Platinum, platinum PT. Then you can use silver, silver Ag. तो ये सब क्या है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो लिस्ट रिएक्टिव डज नॉट कोरोड इजीली. सो आंसर फॉर दिस इज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम. व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज क्या होता है? एलॉयज आर ए होमोजेनियस मिक्सचर. इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर है. होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स दे विल कंप्लीटली मिक्स्ड. किसका मिक्सचर? मेटल विथ मेटल हो सकता है, दो मेटल्स, मोर देन टू, और मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल भी हो सकता है. तो एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल्स एंड ए नॉन मेटल. एग्जाम्पल इज कॉपर, जिंक. ये मेटल्स होता है किसमें? ब्रास एलॉय में. तो एलॉय सिंपल मीनिंग मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल्स एंड ए नॉन मेटल्स. सो दिस Intex question is finished. If any doubt or confusion, you can ask me in the comment section. Thank you.